work was waiting to be done for a long time. और एक नया अध्याय लिखा जाना जरूरी है. ऐसा ही काम किसी ज़माने में धर्मपाल जी ने किया था. Yes. और वो दुख की बात है कि बहुत आगे बढ़ा नहीं. और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसको सिरे चढ़ाकर ही चैन लोगे. खैर, जो आपने अभी इन्हें चार्वाक की संख्या दी, आपने कहा कि चार्वाक हैं, एथिस्ट हैं, वगैरह वगैरह. मुझे लगता है कि ये मिशनरी असॉल्ट का एक नया स्वरूप है. जी. क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मिशनरी जितनी भी संस्थाएं हैं, एवेंजेलिकल ग्रुप्स, अमेरिका के, यूरोप के, जो भी फंडिंग करते हैं हमारे लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट को करते हैं, मार्क्स को. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात. और किसी को नहीं, उनके नाक से नीचे उतरता नहीं. अपने मुल्क में इस तरह की पेट्रोनेज कभी लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट को नहीं मिली, जो हमारे मुल्क में केवल आपको कोई फेलोशिप नहीं मिल सकती, आपको कोई फंड ग्रांट एनजीओ एक्टिविज्म के लिए नहीं मिल सकती, जब तक लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट प्रिज्म से आप हिंदुस्तान को न देखने के लिए तैयार हो. जी. तो ये मिशनरी असॉल्ट का एक नया रूप है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ जो फंडिंग भी एनजीओस को भी जो दी जाती है, बहुत से मिशनरी है पर सेक्युलर बना के, सेक्युलर टाइप तीसरा शनिवार को कौन कहता है कि वो बेचारी रिलीजियस है. Right. परंतु क्या कह ढाती है हम जानते हैं. ये ठीक बात है. दूसरा जो उसका प्रूफ ये है कि कैसे ये मिशनरी असॉल्ट का हिस्सा है. अगर आप देखें, इनमें से कभी भी किसी ने प्रोसेलिटाइजेशन, क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ लार्ज कम्युनिटीज, एक शब्द उसके विरोध में नहीं कहा. क्यों कन्वर्जन हो रही है? लोगों को रहने दीजिए जो मानते हैं. जैसे ही हिंदू धर्म के लोग वहाँ पहुँचते हैं, या छोटा मोटा छिटपुट सा तो घर वापसी का एपिसोड होता है, तो बवाल मच जाता है कि रिलीजियस फ्रीडम पे अटैक है, और हिंदुस्तान को बहुत ही भद्दे तरीके से ये हिंदुस्तान में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है. और ये सारे लोग पोलॉक और उसके उस हिस्सा का, और मेरा ये मान उस बैंड वैगन में चढ़ जाते हैं. और मेरा ये मानना है कि जो बीजेपी और मोदी से जो इनको पैथोलॉजिकल नफरत दिखती है, ये कोई ऑपोजिशन नहीं है इस इशू पे या उस इशू पे. ये पैथोलॉजिकल अवर्जन पोलॉक को भी और बाकी सबको भी, उसका बुनियादी कारण कि बीजेपी इतने ज्यादा खुले दिल से इनको कन्वर्जन नहीं करने देगी. इट विल नॉट अलाउ. सो ये जो सारी एकेडमिक ब्रिगेड तैयार हुई है, it has been in a way an army fighting the battle on behalf of missionaries to prepare the ground for them, A, to make us self-hating, secondly, any attempt to control, even when the missionary activity is sinister, any attempt to control, they will just go ballistic and put the... I agree with this. Let me comment. I agree with this. And one last sentence. Yeah, I agree with this, yes. As much as I enjoyed the book, and I think it's historic, मुझे लगता है कि आपने पूर्व पक्ष बहुत ज़्यादा दे दिया, उत्तर पक्ष बहुत कम है, और वो बहुत ज़रूरी है. उत्तर पक्ष, ये लोग उत्तर पक्ष देंगे, because I actually जो कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी को मैंने कहा और चेन्नई में भी कहा कि your problem is understanding heavy English, academic English and Western thought. I will come and pretend I am Pollock and give you a seminar. I will be your Purv Pakshin and I will debate. I will tell you what is my position on Ramayana, on Vedas, ये वो आपको जवाब देना पड़ेगा. We should practice this kind of a debate where somebody who has understood them to some extent or better than other people of our kind have will come and debate. I will pretend I am this Charvak 2.0 and I will really give them a hard time and say कि अब आपको जवाब देना है. Are you ready? And they said, yeah, we are ready. So this is how we will start. Now, regarding use of the left by the right, हमने ये tweet भी लिखा है कि Indian left is under the remote control of the American right. ये इंडिया में समझ नहीं आया लोगों को बात कि
कि ये जो लेफ्ट है दे आर यूजफुल इडियट्स, इनको कहा जाता है यूजफुल इडियट्स, मतलब इनको यूज़ किया जा रहा है बिकॉज दे आर नॉट, उनका रूटेडनेस नहीं है, इट इज़ अ ब्रिगेड टू डिस्ट्रॉय, डिसमेंटल, डिसरप्ट some civilization. They will not be able to replace it with a leftist communist state because it is not valid, it is not viable, but they will first destroy, then it will create a ground for a new civilization, the Judeo-Christian, to come. ये तो बिल्कुल ठीक बात है. The left and right work together in this way. जो left वाले हैं, they are secular in the sense that they don't have a faith, they don't believe in a faith, but उनमें हेट्रेड, नेगेटिविटी इतनी है कि दे कैन बी यूजफुल, दे कैन बी पैकेज्ड एंड टारगेटेड, तो वो इस तरह से उनको यूज़ किया जा रहा है. तो ये जो चार्वाक 2.0 है, अनलाइक द चार्वाक 1.0, एज यू सेड, दे आर अल्टीमेटली सर्विंग द कॉज ऑफ अ राइवल सिविलाइजेशन. Charvak 1.0 were not people who were the attack squad of some Buddhist or rival group. They were just genuinely feeling that way, and they were not working on behalf of somebody else. Charvak 2.0 is a very complex entity. So this book, one of the insights that I'm saying is a new way of understanding the Indian left and their alliance with the Western left and right. This, they're funded by both left and right from the overseas. They accept this grants and all that. So the Indian left at the time of Romila Thapar, Irfan Habib and so on lacked knowledge of Sanskrit. तो जब वो लिखते थे तो people used to say आप तो ओरिजिनल टेक्स्ट तो पढ़ ही नहीं सकते, आपने तो जो वेस्टर्न कॉलोनाइज्ड ओरिएंटलिस्ट ने लिखा है, ट्रांसलेट किया, उसके बेसिस पर आप लिख रहे हैं. And Romila Thapar, Irfan Habib, all these people would be, Nirul Hussain, all these kind of people would be dumbfounded and very embarrassed. So then came Kasambi. He was Sanskrit fellow, leftist. Now, Pollock situates himself in the line of taking Kasambi forward. He situates himself. कि ये Sanskrit studies should be handed to the leftists and training people who are leftists with credentials from JNU taken to learn Sanskrit. What is wrong? क्या दलित के बारे में लिखा होगा, क्या women के बारे में लिखा होगा, क्या Muslims के बारे में, trying to interpret things in a very Marxist leftist way and send them back. So this is going to be a new generation of left wing, the Charvak 2.0, who are now armed and dangerous with some knowledge of Sanskrit. This is how I see this whole the political dynamic. Hanji, please. नमस्कार. ये वर्षों से संस्कृति में चहलकदमी की जो मुहिम चल रही थी, उसके प्रति आई डोंट थिंक कि लोगों का ध्यान इतना आकर्षित हुआ है. और मैं छोटे उदाहरण दे रही हूँ कि कई वर्षों पहले दक्षिण में, और खास करके दक्षिण के राज्यों में, जहाँ वीणा, वायलिन, वोकल, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और कृष्णानी बेगने पारो एक बहुत प्रसिद्ध पद है जो माला सरस्वती से लेके हर कोई करता है, उनका पुरंदरदास का, कि कृष्ण, छोटे से कृष्ण जल्दी से आओ. उसका उन्होंने कर दिया ईशु नी बेगने पारो. ताए यशोदा, ताए यानी माँ, ताए मारी मारी अम्मा. ऐसे करते करते हमने बहुत सारा देखा कि नटराज की जगह क्रॉस लगा के कार्यक्रम हो रहे हैं. दक्षिण में काफी डीम्ड यूनिवर्सिटीज पैदा हो गई हैं which are giving BS, MS and PhDs in all these cultural subjects. Even near Banaras. Oh. Even near Banaras, somebody sent me a very major dance academy which has been taken over by the Christians. पहले और उनका पे ग्रेड इतनी अच्छी है कि all the Hindu traditional dance teachers are teaching there very happily कि हम we are looked after, और टेक्निक्स और वोकेबुलरी और लैंग्वेज एंड सिंबलिज्म वहाँ से सीखते हैं और फिर उसको कोरियोग्राफ करते हैं क्रिश्चियन स्टोरी. ये बहुत प्रॉब्लम हो गया जी. ये मीठा जहर है, बिल्कुल, जो वृक्ष को कुल्हाड़ी नहीं मारता है, वृक्ष को पूरा सुखा देता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसके प्रति फिर भी सजग होना बहुत आवश्यकता है. तो ये भी हम इसके बारे में भी बुक में लिखा है, दिस आइडिया कि ये जो इनकल्चरेशन है,
इनकल्चरेशन मतलब इन्फिल्ट्रेट कर दिया ऊपर से. यू सी शेल्डन पॉलक इज इम्पॉर्टेंट फॉर अनदर रीजन ऑल्सो. ही इज वेरी एस्थेटिक. आप जो कह रहे हैं एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं पर अंदर जहर है. बहुत अच्छा. ही इज वेरी एस्थेटिक इन प्रेज फॉर संस्कृत एंड संस्कृति. कॉन्स्टेंटली सेइंग क्या ग्रेट पोइट्री है, कैसे लोग थे, क्या सिंबलिज्म है, क्या वाह है. लेकिन जो व्हाट इज द एक्चुअल आइडियोलॉजी इनसाइड, most of our people are not able to understand. They're not able to. अभी मैंने उनके कुछ टीवी इंटरव्यूज और कुछ जो उनकी राइटिंग्स हैं, आई हैव लुक्ड एट इट एट 2 levels. एक तो लेवल है, इफ यू आर सुपरफिशियल पर्सन यू विल से ही इज प्रेजिंग आवर कल्चर, ही इज प्रेजिंग आवर. इवन द मिशनरीज व्हेन दे आर प्रेजेंटिंग द भरतनाट्यम, लॉट ऑफ आवर पीपल से कि हमारे को बड़े रिस्पेक्ट दे रहे हैं. दे रिमूव देयर शूज, कैसे म्यूजिक होता है, कैसे कॉस्ट्यूम्स डाले हैं, कैसे सब कुछ होता है, दे रियली रिस्पेक्टिंग. बट the actual knowledge, the siddhant, the theory, the message being given is undermining us. So what she said is extremely important. Isko, I use Sheldon Pollock's own theory on him. I love to do this sort of thing. तो उनकी एक theory है which is called the aestheticization of power. ये एक मार्क्सिस्ट स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म में निकाली थी कि हिटलर कैसे आ सका. हाउ कुड हिटलर कम व्हेन द इकोनॉमी वाज डिप्रेस्ड. तो देयर शुड हैव बीन अ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन. रशिया में तो लेनिन ने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कर दिया था. जब इकोनॉमी नीचे गई तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो गया. तो जर्मनी में भी जब डिप्रेशन हुआ तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो रहा था. व्हाई नाजीज केम, दे वांटेड टू एक्सप्लेन इट. तो उन्होंने कहा कि नाजीज यूज्ड द एस्थेटिसाइजेशन ऑफ पावर. मीन्स कि दे मेड दिस सॉन्ग्स, डांसेस, movies, theater about the greatness of the Third Reich, parades, symbols, we are shining, we are doing well, हम अपनी chauvinism, great power. लोगों को इतने patriotism and the people were so stirred into the greatness of who they are that they forgot कि हमारे पास खाने पीने का नहीं है, jobs नहीं है. So this is called aestheticization of power. Means लोगों को aesthetics से, arts से इतना उनको capture कर सकते हैं कि जो real hard reality है वो भूल जाते हैं. So this theory which was developed for explaining the rise of Nazism is what Sheldon Pollock uses to explain the rise of Sanskrit and Sanskrit texts throughout Asia. He says कि Brahmins were hired by the king to create a certain aesthetics using Sanskrit, using drama, using theater, using poetry, using kavya, using prashasti of the king in such a grand scale कि people felt very proud कि भी ये हमारा कितना great country है, we have all these things going on. But the real agenda was to spread the power, of the royalty, the elite. So I turn this around and say this is a brilliant theory, but Pollock is doing the spreading a certain ideology using the aesthetics of power himself. Because when he goes to some place like Jaipur Literary Festival, और वहाँ पर खूब greatness of Sanskrit and poetry is being presented, but in a way that the message is actually a Charvak 2.0 message. It's just packaged in a very aesthetic way. They're actually doing the same thing. So that is the game. हमारे लोग जो हैं, they are sometimes very naive and they only look at कि वो अच्छी तरह से बात कर रहा था, बहुत प्यार से बात कर रहा था. You know, they don't understand कि this business, this is a very Western quality. English people were also talking like very nicely, very sophisticated way, and so many of our people were swayed by that. So this is this quality of the Westerners to be able to quote and chant and wear dhoti and tilak and do all kinds of nice things to make people feel कि भी बहुत हमको प्यार कर रहे हैं. This is a very charm. This charm is very kind of disarming. हमारे लोग disarm हो जाते हैं. So what I'm trying to do is pierce through that and go beneath the surface and say कि गहरी बात क्या है. Please. My name is Gaurav Shori. By qualification, I'm an architect, and for the past 10 years, I've been working in the field of sustainable development and climate change. And I was just looking at the meaning of the name Rajiv, and incidentally, Rajiv means blue lotus, yes. Elephant. It means streaks on a fish. So we run workshops called Swaraj across India. It's gone to Australia, it's gone to Korea, it's gone to Africa, and it's also gone to the United States. And one of the things that we do is we use Western research.
we is which organization? Swaraj. The magazine It's people. called Swaraj. No, Okay. it's an NGO. It's an independent. Good. So it's nothing to do with them. So what we Okay. do is we make Western people, we use research that they've come up with. For example, in latest psycholinguistics, they say that the English language's vocabulary is drawn out of 3 fields: war, medicine, and law. So what we say is, if you want to resort to a world that is sustainable, you have to resort to a language that has the vocabulary for sustainable development. Very good. And show us a language other than Sanskrit Yeah. that has the language for sustainable development. बहुत बढ़िया बात. बहुत बढ़िया बात. Very good. So, to give you a small instance, we were presenting to the World Resources Institute from Washington, and at the end of the workshop, we chant the Shanti Pat, Om Dhyav Shanti, Yeah. Shanti. And all the Americans got up and clapped and said, we are going to use this as the mantra of our organization because we've never heard anything like this anywhere else in the world. Right. But, I must also add that the Indian people of the same organization in India, which is incidentally headed by a gentleman called Ali Godrej, stood up and they were up in arms. And they were saying what you're trying to propose is the antithesis of development. Yeah. That's Because not you are what we say. Brahmanical and you are anti-Dalit. They bring that language. That angle. Yeah. So this is a problem. So problem is that you have to win. This is where I like what he said. The first battle is more important. You have to win the battle of Indians here in India, rather than giving millions of dollars to set up chairs overseas. That same money should be spent on setting up research here in India to win the battle right here. Because यहाँ से, if you don't consume with pride your own civilization, you can't export it. You दूसरे लोग थोड़ी देर के लिए they'll clap and they'll be nice, but ultimately, if our own people are ashamed, have an inferiority complex, it's not going to last. Please, last. Thank you, Rajiv, for your very good lecture. I have 2 questions. My first question is that on my Facebook, I have been getting figures of our Hindu gods and goddesses, in which the Western-looking figures have been given. I mean, wearing the attire of Durga ji or Kali ji or Ram or Sita or like that. So how to combat that? And the second question is that the part of the battle for me has been for Sanskrit, how to create this interest for Sanskrit in the younger generation. All this because they are not interested. I've been into school ठीक है. teaching for Good. past 30 years, but the numbers are receding. Yeah. So, दूसरा, you also ask, then I'll answer because then we'll wrap up. हाँ जी, आप खड़े हो जाइए, please. Face, yeah, मेरा camera. क्वेश्चन कुछ और तरह का है। आपको देख रहे हैं और आपका लेखन भी वर्षों से सुन रहे हैं और लेखन देख रहे हैं, आपका वक्ता भी सुन रहे हैं। आपकी 4 किताबें अभी पिछले वर्षों में हमने पढ़ी। तो मैं बार-बार यही सोच रही हूँ, पहली बुक थी ब्रेकिंग इंडिया। No, पहली बुक थी Invading the Sacred. तो हमने वहाँ गलती की. I had inferiority complex. तो मेरे को किसी ने कहा कि आप लिखेंगे you are unknown, तो कोई पढ़ेगा नहीं. तो फिर मेरे को किसी ने प्रपोजल दी कि आपके जो विचार हैं, जो भी आपके आर्टिकल्स हैं इस प्रॉब्लम, इस एरिया में, वेंडी डॉनिक के जो मेरे डिबेट्स थे, गेट सम अदर पीपल टू edit, be the editor of a series of articles. So it became an edited volume, not by me but by others, but about my thoughts largely. So that is I consider that my first book because I put so much heart and soul. Uske baad I learned a little bit about marketing a book. Your book, your ideas should be in your name. This is what I learned. कोई inferiority complex की जरूरत नहीं. I can do very well in my own name. I don't have to hide कि भी ये ज़्यादा famous लोग हैं तो इनकी book ज़्यादा चलेगी. वो इतनी चली इसलिए नहीं because they were not so actively and aggressively marketing it. They were not debating. They were not out in the face and arguing their position. When I tried to argue for that book, people would say, "Who are you? आपका तो author का नाम ही नहीं है." So it was very difficult to say. So now that book, Invading the Sacred, replaced with my original writings rather than other people rewriting them. My original Sulekha writings and other writings is going to be republished this year. So I'm putting my own book out, that original book again. So that was my actually first book, but it will look like it's a recent book. इसको नहीं देखा मैंने, हाँ. इससे पढ़ा, लेकिन पहली किताब जो मैंने पढ़ी वो थी ब्रेकिंग इंडिया। जी. उसके बाद बैटल फॉर संस्कृत को मैं उसी का ऐसे लग रहा है जैसे ये भी एक ब्रेकिंग संस्कृति और संस्कृत हो रहा है। जी. तो ये दोनों
एक विचार की धारा चलती है, थॉट वेव चलती है। प्रबुद्ध एक चिंतक होता है, एक सशक्त लेखक होता है। तो इनमें दो तरह के आपके ग्रंथ हो रहे हैं, दोनों अलग अलग तरह के ग्रंथ हैं। एक में आपका संघर्ष दिखाई दे रहा है, एक में आपका चिंतन और वो बहुत गहराई से, गंभीरता से भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति के मूल्यों को समझना। आपको इन दोनों में से कौन सा आपका मन किसमें ज्यादा लगता है? तो मेरा मन एक्चुअली हमेशा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसमें लगता है, जो 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 इन दोनों से अलग है। इन दोनों से अलग एक और भी है। सो मैं अब ये कितने मल्टीपल वॉल्यूम्स लिख रहा हूँ कितने सालों से, कि इंडियन ऑरिजिन्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, Indian origins of medicine, Indian origins of linguistics, mathematics, Indian origins of so much culture, mental health, cognitive science, this whole the mindfulness industry, mindfulness jo vipassana has become mindfulness. So I'm looking at so many major fields that the West says ki hamari civilization hai, which actually have Indian origins. And also the Indian origins of certain things in Christianity, which people don't realize that is true. And the Hinduization of Christianity is still going on in the last 100 years. So next abhi in cheezon mein I will produce something. But I have to first establish a book, come 2-3 times, get enough people interested, get enough people arguing on our side. Then I feel कि ये book safe है, secure है, I can move on to the next project. But I have 15 books in the pipeline in different stages of development on many, many topics. So I don't know how much I'll be able to finish, but that is my ambition. अच्छा, तो उनका सवाल था, वो उसका जवाब देना चाहिए कि how the children, the second question was how the children should be motivated. This is a question for Sanskrit Bharati. Quite honestly, they are more experienced, they are doing this all the time, they are very successful. I am humbled by how much they have done. I am so impressed and I am very grateful for all the promotion. And also, the first question kya tha? It was We are getting on Facebook. okay. Now, the modification of deities, modification of symbols. Actually, it's a wider problem. You go to the south and they have Mary wearing a sari with the bindi and Jesus on lotus position, and they're basically duping people into thinking कि ये आपका ही देवता है, ये Mother Mary भी देवी है, like that. So this is a strategy they call inculturation, to mix the two cultures up in a way कि people find it very easy to go back and forth and think everything is same. So that is how it is. Now, having said that, I'll also say that we should not consider Hinduism to be Indian only. We have a universal claim to truth, just like Christianity and Islam have universal claim. So there is nothing ethnic or racist about our tradition. We have to be able to present our culture in a way that any white person, any Chinese person, any black person, any Native American, Hispanic, anybody of any race should be able to be a Hindu, full-fledged Hindu, behave like one, practice it. We should welcome them, honor them. We should globalize our tradition. And so I feel that as far as giving a look which is not Indian look, I don't see that there is a problem. One of the things that Buddhism did is when they went to China, the Buddhists are Chinese, Buddha is Chinese looking, you know. हाँ, तो idea being के kind of ये जो archetype है, this archetype of Buddha, it can be seen through market, जहाँ भी market है, जैसे Pizza Hut sells some paneer tikka pizza or something like that, right? You Indianize the thing. But basic structure उन्हीं का है, पर उसमें Indianized content आ रहा है. इसीलिए इसी तरह से we should be okay. We should be okay if people do some adaptation. But you have to look at उनके intentions क्या हैं. Are they appropriating? Are they making fun? If they are making fun, if they are insulting, if they are distorting, we should complain. But उनमें यदि श्रद्धा है, we should also be okay. And maybe we have to get to know these people and their intentions and welcome them. Namaskar, धन्यवाद. I'm very happy कि ये हो चुका है.
काफी सवाल पूछ सकते हैं। Oh, you have more. सवाल नहीं है सर, मेरा नाम रामजी बाली है, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ। कहाँ से? मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। जी, मैं थिएटर डायरेक्टर हूँ। जी जी। तो आपके 15 प्रोजेक्ट हैं किताबें लिखने के, तो जितनी हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को डिस्टॉर्ट किया गया है लिटरेचर के लेवल पे, तो मेरा एक सुझाव होगा कि इस तरह का अगर आप कभी नाटक लिखें और वो छपे, तो हम, क्योंकि उसको मास तक पहुँचाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम मोटी चीज़ें पढ़ना लेकिन अगर कोई ऐसा नाटक मिलेगा तो उसको हम कॉलेजेस में नई जनरेशन। So I would like help both in video turning these ideas. Each book could be 5-6 videos. Each could be turned into a natak. I would love it. In fact, कितनी बार हमने लोगों को ऐसे अप्रोच किया है, but nobody has actually done it. But somebody has to work with me and say कि हमारा project है, I will be an advisor. But I cannot do the work. You have to do the work. I can give you my input, and I would be so happy if you can take some of these, dramatize them, and maybe you can do a dance. You should help in this. Bilkul. Okay, so you please, this is a video evidence. She has agreed. ठीक बात. Please. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Oh, hello. Good for you. You have to be a astrological forecaster. He's my very good actor. आप युक्ति नहीं बताए, हाँ? हाँ, time is sorry. First page, title page, but don't come in. Wait. उधर से आओ. One by one यहाँ से आओ. ठीक है. हाँ वो सब ले लिया मैंने। Don't dinner for me tonight until but you have now art and reach. You know, you have समीना वहाँ से बुल्ले बतांतर चलता रहता है जी बड़े लेवल पर आप रियल दिखाएं अच्छा, तो अपने आप ही सब आ पाएगा उसमें कहाँ कौन प्रधानमंत्री का एक भाषण क्या रोक सकता है? ये नहीं कहता संजय जैसे असर और या उसे कमाल लाइफ कैसे है, समाज लाइफ कैसे है, ऑर्थोडॉक्स लाइफ कैसे है। मैं आई एम नॉट इवन पेइंग अटेंशन। वेरी गुड वेरी गुड रिसोर्सेज में Yes, thank you so much. Sit down. Can you teach me? मेरा email ID है, पीछे उनका वेबसाइट है, वहाँ पर लिखा है how to contact you. Every book has been how to contact you. That's how you make it. You can run over email ID. लेकिन
एक मिनट मैं एक बात Get email IDs of people. बस मैडम पीछे थोड़ा रहिएगा, हल्का हल्का सब पीछे रहिए। नीचे कर नीचे You stand here and then I can do anything that my ears will listen to you. My head will You know the whole context is okay. No, but I don't know what you can do. Can you write a check? Can you are a movie maker? Can you do cartoon book? Can you do theater? Can you turn it into? You have to. So the first problem is saying I do anything. That's not true. You have to say my specific. You have to say this is what I can do. Give me a project of what you can do. Big project. Here is the first one. You have rewriting in Sanskrit. Okay, I do that. You have to tell me what you can do. I have to figure out what you can do. If you take all the emails in block. तो आपको मेरे